Hi, Sudhir. Hi. So, yeah, I just realized I was talking on mute, right? So the previous link, guys, it got disabled. So we are restarting the session. But yeah, so we'll still take off from where we had left off. And I was, introducing Rohit, right? So Rohit is an IIM a Lucknow student. He is. We are proud, to announce that he has been a CL student with us. Right, Rohit hails from Bharatpur, and he studied his engineering from Roorkee and prepared with CL Roorkee, if I'm not wrong. Right, Rohit. Yeah. Right. And as I was saying in my earlier introduction, uh, basically he had appeared for CAT three times. He quit his job in the final one, I guess, right? And to prepare for CAT. So he appeared for CAT in 2018, 20, and 22. And with that effort, he finally got into IIM Lucknow. And the fun part that I want to talk to him about is Rohit. Could you, from your own, your own way, please tell us what all calls did you have before we Uh, go so, ahead with the session? so I scored 99.67 percentile, and with that, I was having Ahmedabad, Bangalore PGP BA, Lucknow, Kozhikode, and Shillong, Wow. along with the SPJMI. NSP Gen, right, right. I remember. So okay. So with all these calls, I think except for AB, you converted everything else, Yeah, and yeah. you got into IIM Lucknow. That's a wonderful story. How much percentile was that? 99.67. 99.67. Very nice. So Rohit, I'm proud to have you here, right? And as Rohit was saying, he was on the place where you guys are right now, right? And hopefully, hence, you guys will be where he is today, right? And with that thought, Rohit, what do you? I called you at this juncture because I was discussing the scaled score, a relationship with the percentile. Uh, what do you say about this? Anything that you want to add to this? So mostly like when we see from the section-wise perspective, our percentiles are not at that level. While we convert into overall basis, the percentiles are higher. So if you are scoring like 97, 97 in every section, you will be getting 99 in the overall. So try to maximize in each section, and you will be maximizing overall by multi-folds. So that was Perfect. But my what perspective. what do you what would you say to those students? I'm sure a lot of students here have a different problem. The problem is कि सर दो section मेरे strong है, one section is very weak, or one section is very strong, one section is very weak, and one is somewhere in between. Right? How does he achieve a 99 percentile or a 95? Or if he's sitting at a 70, how does he even reach a 90? What is the strategy there? सो मेरे केस भी सिमिलर था लाइक आई वाज बैड इन वीआरसी सो इसलिए मेरा थर्ड अटेम्प्ट लगा तो आई वाज सॉर्टेड इन क्वांट एंड डीएलआर वीआरसी आई फोकस सो इन I was preparing VRC little more in last 2 months that we have like 55 days we have. So I prepared more in on VRC. I focused on RCs and VA part separately, and my first perspective was clearing the sectionals and then improving on that. So I was not able to clear sectionals in my first two attempts. So in this attempt, my overall objective was to just clear the cutoff, but I eventually scored better. So that was. Great. So can I also ask you how many mocks did you appear for? So last year I appeared for around 25 mocks. 25 mocks. Very nice. Okay, so that goes with my number. So I tell students के anywhere between 25 to 35 mocks of cat. 35 बहुत ज़्यादा हो जाता है, but उससे ज़्यादा नहीं ढूंढना चाहिए. 30 is an ideal number, but 4-5 मिस करके 25 दे सकते हो. So that is a realistic number, is what I understand. Right. Do you agree with this? So Yeah. mostly 25 mocks and plus last year, previous year CAT papers. So I also gave them as a mock. So that also helped in the November month, Perfect. basically. Perfect. Super. So great. So with this start, let's take it forward, Rohit. And I have some. Now we'll go sectional strategy. Two into sectional strategies. Okay. So I have put some points here, right? So let me take the first part, and I would want you to sort of comment on it. If you have some cases to share, we would love to hear. Okay. So because VRC was your weakness, as you said, it was not your strength area,
right? So what I understand, and I'll start with another of my students example, जिसका मैं example देता हूँ. यश था a couple of 3-4 years back, I guess. So I remember Yash was similar to your case where quant DI से strength है मेरा 99% लाना मेरे लिए possible है, right? It's not difficult, but verbal उसका 46 के ऊपर नहीं जा रहा था percentile, and we are talking about August September. Okay, so we are just getting out of उस zone में, and he used to come very worried कि सर बाकी सब संभाल लिया but वो सब खराब हो जाएगा if I cannot get a score in verbal section. I say at that moment we had given him all sorts of things कि ये कर सकता है वो कर सकता है, and he was doing it. So then all we could say is बेटा hold on, patience रख, analysis कर, persevere, keep practicing, keep analyzing and keep working on it. And he would come and tell me that sir keep working on it. आप मुझे महीने भर से यही बोल रहे हो. अक्टूबर में उसने मुझे आके बोला, मैंने बोला I can tell you कि होगा. हम ये नहीं बोल सकते कि वो जो किंक है in the graph वो कब आएगा, but वो आएगा. Because it is, in my opinion, it is about finding that right, the sweet spot, कि मुझे समझ में आ जाए कि मेरा ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है और ये छोटी सी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, इसको कंबाइन करूंगा तो स्कोर आ जाएगा. Now that realization takes time and patience is what I understand. Do you agree with this? I also agree with this. Like in BRC is like we need to build on our reading habits and as well as on the speed. So this cannot be built in a day. So like we can learn the quant concepts and LRTI concept in a day, but we cannot build on our reading skills in just a week or a month. It requires You put a very very important point there. I'm sorry to interject, but quant में कैसा है पता है कि मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लिया, हफ्ता भर बैठ के मैंने TSD और टाइम एंड वर्क मेहनत कर लिया या व्हाटएवर टू टॉपिक्स यू टेक, और मुझे पता है कि उसके क्वेश्चंस में मैं इजी मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच वाले ले लूंगा, डिफिकल्ट को छोड़ना है, पर मुझे उतना पता है कि वो 3 क्वेश्चन मेरे निकल ही जाएंगे. वर्बल में वो नहीं होता है ना. So okay, so the first 2 points, practice and persevere and patience रखो. Guys, a lot of मेरा एक favorite dialogue है, कि cat is like a mini life, it's like that, because आपके इतने emotional upheavals आएंगे, कभी वो स्कोर ऊपर चला गया, कभी एकदम से नीचे गिर गया आराम से और पता नहीं कि क्यों गिरा. Life does that to you. So take cat as an experience. तो life अगर आपको इस तरह के experience दे रही है तो ये थोड़ी बोलेंगे कि life end कर दो, वो that is not a solution. So same way CAT में भी वही है कि you CAT preparation छोड़ दो, let's quit वाला is not a solution. Last day तक try करना चाहिए, right? What do you say, Rohit? Yes? So like मेरा भी मतलब कुछ मॉक्स में स्कोर काफ़ी लो आता था, तो मैं स्कोर और परसेंटाइल तो बिल्कुल ही मतलब देखना ही छोड़ दिया था लास्ट 2 months में. मैं खाली फोकस एनालिसिस एंड सॉल्यूशन पार्ट्स पे ही फोकस रहता था. Wow, okay. So the important part hence comes to the third part is reverse engineer the section, right? कि मेरा score. So I'll tell you a best strategy, whether it is verbal, quant or DILR, guys. What you can do is pick up your best mock, not overall best. Pick up your sectional best. मान लो VARC मेरा best score कहाँ आया, VARC मेरा worst score कहाँ पे आया. What did I do right in the best score that I got? What are the strategies that worked for me? What kind of questions did I attempt which got right? Right? What did I do wrong in the worst one? And what did I do wrong there? Right? So you will get lessons of what to do and what not to do. In the next mock, you build a strategy on that basis कि ये तो करना ही है और ये नहीं ही करना है. That is what we call strategy, right? That is exactly how it works. And this works for every section. So if you do it for every section, you know what works. Now what we need to do is, in that one mock, we need to bring everything together. So तीनों सेक्शन के बेस्ट्स मुझे करने हैं और तीनों सेक्शन के वर्स्ट्स डोंट डू वाले जो पॉइंट्स हैं वो मुझे नहीं करना है, और ये सब कुछ मुझे एक मॉक में लेके आना है, तब होगा जादू, है ना भाई? So that is what you. So reverse engineer your section, work out where you've got the score from, where you can get the score from. A lot of things हम लोग बोलते हैं CL में, and I'm sure रोहित आपने भी ये फॉलो किया होगा, औकात स्कोर की बात करते थे हम लोग. औकात स्कोर क्या है? अगर मैं मॉक दे रहा हूं और मेरा एक सेक्शन में मान लो व्हाटएवर स्कोर आई गॉट, अगर मैं वो मॉक के बाहर वही सेक्शन देखूंगा, आराम से करूंगा, दिमाग शांत रखूंगा, राइट, कामली,
So what will happen is I might score 3 marks, 6 marks more. One or two questions I might get right more. One or two questions I might get wrong less. और मेरा 3 से 6 मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएगा कम से कम. तो कम से कम अगर सेक्शन में 3 से 6 मार्क बढ़ सकता है तो ओवरऑल 10 से 15 मार्क भी बढ़ सकता है. इफ आई गेट दिस 3 सेक्शंस राइट. सो पहले अपना औकात स्कोर तो निकालो. ये तो पता करो कि मैं कितना ला सकता हूं और कैसे, कहां से. Once you figure that out, you know what to do in the next section, the next mock. Rohit, any specific strategy that in this sense you followed during your preparation? So last year I started my preparation around August. So till this day, starting of October, मैंने 10-12 मॉक्स दे लिए थे. तो 10-12 मॉक्स से मेरे को इतना एनालिसिस हो गया था कि ये मेरी स्ट्रेंथ है. लाइक आरसी में मेरे को पता था कि मैं 3 ही आरसी पढ़ पाता हूँ. वीआरसी में और वर्बल एबिलिटी में मेरे को पता था पैरा समरी में सही हो जाएंगी. तो आई वाज फोकसिंग मोर ऑन पैरा जंबल्स एंड ऑड सेंटेंसेस. सिमिलर एलआरटीआई में किस टाइप के सेट्स में हो जाएंगे, किस टाइप के सेट्स इंप्रूव करने हैं. तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मेरे को अक्टूबर के फर्स्ट तक आके पता चल गई थी. उस हिसाब से मैंने नेक्स्ट 2 मंथ्स प्लान किए थे कि मतलब कौन से एरियाज को स्ट्रेंथ में अपने और बिल्ड ऑन करना है और वीकनेसेस को इतना इंप्रूव कर लूँ कि अगर इजी क्वेश्चन आए तो आई कैन डू इट. Okay. Great. So, fair enough. Smart work करना है, ये तो given है. Go on the offensive. Now, one more point that I want to point out. हम लोग है ना डर के इस स्टेज पे हमें नेगेटिव मार्किंग का डर है. पता है कि मुझसे पैरा जंबल नहीं होता या मुझसे एक आध आरसी में प्रॉब्लम होगा. We know these things. If you have given even 5 to 7 tests, you know this. If you've not even given 5 to 7 tests, guys, it is a matter of alarm. Start doing it right now. So understand what Rohit said. Rohit ने बोला इस स्टेज तक मैं 12-13 टेस्ट दे चुका था. Am I right with the number? Right. 12 to 13 tests he had already attempted. At CL, we are giving 30 tests, 15 prime mocks and 15 CDCs. आज के दिन में, if I am not wrong, 16 tests are already done. 16 में से if you have even missed 2 or 3, comes to the same number that Rohit is talking about. 12-13 टेस्ट दे चुका हूं मैं. You exactly know where your strength and weakness is. Now the job is to experiment. So strategy में experimentation होता है कि क्या am I attempting too less? Maybe I might have gotten औकात score says कि मेरे 3 और क्वेश्चन सही हो सकते थे या 2 और हो सकते थे. Am I too afraid to attempt them, thinking that I might get them wrong? तो okay, next mock में go forth and conquer. Play on the offensive. Play on the front foot. Do those 3 questions more. क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत होंगे. I'll come to know that this doesn't work for me. Try तो करो. Play on the offensive. Whatever section your weakness is, VARC, Quant or DILR. Right, Rohit? Right. So now the next point of the strategy that I want to come to quickly, because I'm sure we have to go a little faster also. Solve VARC like Quant. Now ये मैं हमेशा बोलता हूँ, solve VARC like Quant. Please इसको follow करो. आपके immediately कुछ marks या तो बढ़ जाएंगे या you will save some wrong ones. Now what does this mean? How do I solve VARC like Quant? So whenever we solve VARC, what do? We do this. When I see a question, I read the question and then I see which of the options do I like. Is A good enough? No. Is B good enough? And then I relatively try to judge them. भाई Quant में ऐसा करते हो क्या? Quant में do you see a question and say whether I like A or whether I like B more or which one seems to be better option? हाँ, अगर जुगाड़ कर रहे हो, you might do that. Estimation, guesstimation, whatever that you're using, right? But otherwise, you are doing a calculation, finding a definitive answer, and then seeing if the option matches with your answer. Then you are sure that it is correct. Can you do that in verbal? If you can do that in verbal, for example, I read a question, मैं सोचता हूँ कि मुझे पूछा क्या है, पैराजंबल पूछा है, can I work out an answer before I see the options, right? अगर मुझे एक रफ फिगर मिलता है या एक आरसी में एक क्वेश्चन है which is asking you to strengthen something, तो बेसिकली इसको स्ट्रेंथन करना है तो मुझे क्या ढूंढना होगा? What am I looking for? If I work it out in my mind and then look at the option, there's only one option which will fit, or maximum 2 options which will confuse me. Other 2 will get eliminated. You don't have to compare which is better.
So try to solve, and this is not an easy thing. It's not as easy as I'm saying it. You'll have to practice. लेकिन आपके पास 55 दिन है, and 15 days are good enough. So if some of you have a doubt कि सर अभी तक मेरा कुछ हुआ नहीं है, 55 days is too less. Rohit, what would you say to them? मोस्टली मतलब जैसे 55 डेज बचे हैं, वी कैन ब्रेक डाउन इन 3 डेज के बंचेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. मतलब 3 दिनों में मैं अपने इस वीकनेसेस पे फोकस करूँगा. मेरे को यहाँ पे अपना अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करने हैं, यहाँ पे मेरे को अपनी एक्यूरेसी मैक्सिमाइज करनी है. उस पॉइंट पे मतलब 55 डेज बहुत ज़्यादा बड़े लगेंगे. मतलब इफ यू ब्रेक डाउन इनटू पीसेस ऑफ different task that मेरे को ये करना है, इस पार्ट में ये करना है, then we will able to achieve. Okay, so you are saying break it down into three days ka chunks and make a plan or strategy for those 3 days. In fact, this goes with what I say, that every week you are supposed to take around 2 mocks. More than 2 mocks, you will not be able to analyze and strategize and apply. You know, आप दे तो दोगे. Less than 2 mocks is not good enough at this stage. So again, वो 3 days के चंक में अगर प्लान बना रहे हो तो उसमें मॉक्स भी फिट हो जाएंगे आपके वीक में 2, राइट, एंड प्रेप प्लान, स्टडी प्लान भी फिट हो जाएगा, which is achievable. So I think that's a very good point you've made. अच्छा, VARC specific, अगर just if you go to the right side of the slide, right, we have something called the beast, right? I'm sure you've somewhere heard, maybe Jijo talk about it or we talk about it or whoever, right? So beast क्या है? So you look for the wrong options for elimination. Now what are these wrong options? Either they are too broad, right, जो बहुत जेनेरिक है, बहुत ब्रॉड है, स्कोप को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं आरसी के स्कोप को, या एक्सट्रीम है, दे आर रियली टू एक्सट्रीम. फॉर एग्जांपल दे यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लाइक ओनली, फर्स्ट, ऑलवेज, नेवर, बेस्ट, वर्स्ट. जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपका एंटेना खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई ये यही लिखा है क्या अंदर. Because in such options, the rest of the words will remain the same. The sentence will be the same, and एक extreme word डाल दिया होगा, right? जैसे कि many, आरसी में लिखा है many, वही sentence को उठा के वहां लिखा हुआ है most. So many and most is not the same. You have to understand that this is a little extreme, right? It doesn't mean the same, right? Many students have appeared for the class today, and most students have appeared for the class today. It's two different things. Not the same. So ऐसी चीजें आपको समझनी होगी, because traps यही होते हैं. Okay, then look for alien options. अच्छा, alien मतलब जो स्कोप के एब्सोल्युटली बाहर है, जो एग्जैक्टली वो नहीं बोला, कुछ और ही बोला है, तुम कुछ और ही लेके आ रहे हो. Alien. Okay, side track options. Side track options are those options जो पैसेज में लिखा है, it is given, but it is not the answer to the question being asked. आप क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़े बिना बोलते हो हाँ ये तो है, अरे है, लेकिन क्या वो सवाल का जवाब है? Is it the answer? And finally, the tone mismatch. What is tone mismatch? Where the author is saying the same thing in a different tone. Maybe he's saying it in a normal tone, and option में sarcastic way में दिया हुआ है, तो tone mismatch है. Now this is where your critical reasoning comes into picture. So आपको सोचना है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बचेगा 2 या 1 ऑप्शन. That has to be your answer. So either you work VARC like a quant and arrive at an answer, or you eliminate, or use both of them together, and then you'll work wonders. This needs you to do a lot of practice. ये रात, as Rohit said a while earlier, कि verbal रातों रात change नहीं होगा, reading practice रातों रात नहीं होगा, reading speed रातों रात नहीं बढ़ेगा. It will take time. Rohit, before we move out of VARC, I would want you to share something, whatever in your experience, because VARC was your weakness. So मैंने बेसिकली जो प्लान बनाया था VARC के लिए कि डेली 2-3 डाइवर्स टॉपिक के मेरे को आर्टिकल्स पढ़ने, तो फर्स्ट पार्ट आर्टिकल्स पढ़ना हो गया कि उससे मेरी स्पीड बिल्ड हो रही है, और एज वेल एज मेरे को आइडिया लग रहा है कि पूरे इतने बड़े पैसेज को कॉम्प्रीहेंड कैसे करना है. आरसी में सेम चीज़ हमें करनी होती है. तो एक बार आर्टिकल बिल्ड कर लिया, स्पीड बिल्ड कर ली, देन फिर आरसी प्रैक्टिस कर ली. पर डे मेरा टारगेट था कि 2 आरसी तो करने ही करने, इंक्लूडिंग अगर मॉक दे रहा हूँ या फिर सेक्शनल दे रहा हूँ तो वो डिफरेंट है. 2 आरसी पर डे करने हैं, एनालिसिस करना है. फिर देन वर्बल एबिलिटी का पार्ट. होल्ड ऑन, व्हिच मींस आर यू सेइंग कि अपार्ट फ्रॉम योर मॉक्स you used to do at least 2 to 3 RCs every day? That's what you're saying? Right.
Okay, great. Go on, please. सो आरसीज हो गए, फिर वीए पार्ट हो गया. वीए पार्ट में समरी पैरा समरी सिमिलर होता है आरसी के, तो मैं उस पर उतना फोकस नहीं करता था. पैरा जंबल और सेंटेंसेस मेरा वीकनेस रहा है, मतलब क्योंकि वहाँ पे बहुत चांस है इम्प्रूवमेंट का. आरसी में लिमिटेड है कि मतलब एक दो एरर तो हो सकती है. तो वीए आरसी वर्बल एबिलिटी में इम्प्रूव करना था, तो डेली 2 या 3 क्वेश्चंस दोनों वीए पैरा जंबल्स एंड ऑड वन आउट के प्रैक्टिस करना. फिर उनका मतलब 3-4 दिन बाद सेम क्वेश्चंस रिपीट करना, रिवाइज करना कि मैं सही कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ताकि वो Okay. बिल्ड हो कि So कनेक्ट Rohit हो. is talking about revision. Rohit, I will just halt you here. मेरे को ये रिवीजन वर्ड पे ना बाद में थोड़ा फोकस करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स को लगता है कि मैंने कौन कर दिया है एक चैप्टर या वर्बल में ये हो गया है, तो रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है हम थोड़ी देर बाद उसको उस पर स्ट्रेस करेंगे. प्लीज कंटिन्यू. हाँ, तो बेसिकली मेरा डेली स्ट्रक्चर यही था कि आर्टिकल्स पढ़ लिए, फिर आरसी प्रैक्टिस कर लिए, फिर जो भी पैराजम्बल्स ऑड वन करने हैं वो 2-2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस कर लिए. फिर उसके बाद जो भी मेरा पुराना सेक्शनल दिया हुआ है या मॉक दिया हुआ है उसका एनालिसिस करना कि आज जो मैंने लर्निंग्स हुई उसके बेसिस पे मैं क्या चीज़ें उसमें क्वेश्चंस अब कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने मिस कर दिए थे या फिर गलत कर दिए थे. अब आज की लर्निंग से जो भी मेरी हुई है उनसे वो क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहा हूँ. वंडरफुल. वो मेरा प्रोसेस है डेली. सो बेसिकली मुझे दो चीज समझ में आई आपके बोलने से, जो हम बोलते रहते हैं यार, बट आप जब बोलते तो फर्क क्यों पड़ता है कि इसने किया हुआ है. ठीक है, व्हाट डू वी से? वी से अपीयर फॉर टेस्ट, गिव एज मेनी टेस्ट एज यू कैन, चाहे वो मॉक्स हो, चाहे वो सेक्शनल्स हो, चाहे वो टॉपिक के बेस के टेस्ट हो, चाहे वो डेली डोज वाले हो, जो आप बोल रहे हो रोज के रोज 2-3 टेस्ट कर रहे हैं, तो डेली डोज करेंगे तो वो हो ही जाएगा, वर्बल हो या आरसी हो, राइट. उसके साथ रोहित ने खुद ये बोला कि एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है. टेस्ट देना इंपॉर्टेंट जितना है उतना ही एनालाइज करना, अदरवाइज द टेस्ट इज अ वेस्ट. Right, so if you don't analyze, the test is a waste. Please remember this. And I have a formula, Rohit, that if you take 2 hours to write a test, at least 1.5 times that time should go into the solving and analysis. करेक्ट. और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि एनालिसिस सॉल्विंग से बियॉन्ड होता है. सॉल्विंग एक चीज है जो जरूरी है, एनालिसिस दूसरी चीज है, राइट. उसकी भी बात हम आगे करेंगे. सो यू कैन टेल अस हाउ टू एनालाइज. ओके, so let's quickly move on to the next section, DILR में strategy. So ये कुछ points मैंने लिखे हैं, quickly I'll go through them and then come to Rohit again. Skim through the section, understand the question types. It is very important DILR में, और ये RT99 में हमने बार बार बोला है, हर जगह बोला है, right, that DILR में there are 2 ways to go about it. So let me take to the next slide. Okay, so there are 2 strategies. There is a sniper strategy. Sniper strategy मतलब मैं quickly चारों सेट देख लूं और मैं बोलूं मुझे ये करना है और ये करना है. एग्जैक्टली, दैट्स वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. मतलब 3 और 4 मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है, ये 2 करूंगा और ये 2 को फोड़ूंगा, राइट. दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी. अगर आप 80-90 परसेंटाइल या इवन 95 तक जाना चाहते हो तो 2 सेट ट्राई करो, पूरे 2 फूटे ना फूटे, जितना भी निकलेगा उसमें से आपका 80-90 परसेंटाइल पहुंच जाएगा. बट अगर आपको 98, 97, 99 पे जाना है, then this strategy might not work because you've not even seen the third set. मान लो एक तो छोड़ना ही था, बट 3 तो देखने तो चाहिए थे, पूरे 3 कर नहीं पाया मैं. बट इवन इफ उसका एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन निकल जाता, बट आई हैव नॉट सीन इट ओनली. सो स्नाइपर स्ट्रेटेजी में दैट्स अ प्रॉब्लम. Now the second strategy which comes that you can see below is sweep and conquer. What is sweep and conquer? Sweep and conquer मतलब मैं एक सेट में गया, जितने क्वेश्चन निकले निकाले, सेकंड सेट में गया, जितने क्वेश्चन निकले निकाले, थर्ड में गया, फोर्थ में गया, मैंने चारों सेट देख लिए और जितने क्वेश्चन हर एक में निकाल सका निकाला. ये भी अच्छा है बिकॉज मैंने चारों सेट देख लिए हैं DILR के. सो आई शुडंट हैव अ प्रॉब्लम. आई हैव नॉट मिस्ड आउट एनीथिंग, बट आई हैव, बिकॉज आई हैव डन ऑल 4, मैं ढंग से किसी एक या 2 सेट पे फोकस नहीं कर पाया. So these 2 strategies are extreme. One says कि मैं 2 ही करूंगा और exactly पूरा फोड़ के आऊंगा, पर जरूरी नहीं है कि तेरा दोनों फूटेगा. ओके, दूसरा बोलता कि मैं चारों देख लूंगा, जितना निकलेगा निकाल लूंगा, बट तूने ढंग से तो 1-2 सेट किए नहीं. So the good strategy is a combination of these 2. So I'll go back to the previous slide. Okay, so first you skim through all the sets. Quickly देख लो कैसा सेट है, फेमिलियर है, कॉम्प्लेक्स है, नहीं है, क्वेश्चंस में से कुछ हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्वेश्चंस भी देख लो, क्विकली गो थ्रू इट. इट शुड टेक यू 5 to 8 minutes मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लेना अपने को.
वो 5 to 8 मिनट्स वेस्ट नहीं है, बिकॉज उन 5 to 8 मिनट्स के बेसिस पे यू आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी माय सीक्वेंस. So that one bad, dirty set, right, difficult set, I am going to not do that. वो मैं decide कर चुका हूँ. That one nice, simple and sweet set that I see, वो तो मैं करूँगा ही करूँगा. So assume that I will do the second set definitely. I am going to leave the third set for sure. In between 1 and 4, I might take the first set before the fourth one, which means I'll go from set number 2 to set number 1, then maybe try set number 4 if I can, if I have time, or maybe take out a question or two out of it and then go ahead. I don't even want to do the one set at all. So something of this sort. Now each of you, there is no single strategy, by the way. Whatever works for you works for you, right? So every individual has his own strategy too. There is something that I can say कि ये मेरे लिए काम किया है, तेरे लिए ना भी काम करे. So Rohit, what do you say about that? And what was your strategy? So मेरी भी मतलब थोड़ी सिमिलर स्ट्रेटेजी थी. फर्स्ट लाइक 5 मिनट सारे सेट्स गो थ्रू करने की कौन कौन सा टॉपिक से सेट्स हैं और बेसिकली कितने वेरिएबल्स हैं, मतलब सॉल्वेबल है कि नहीं है, सॉल्वेबल नहीं है, कौन कौन सा सेट सॉल्वेबल है और कौन सा मेरी स्ट्रेंथ एरिया में लाई करता है. तो फर्स्ट स्ट्रेंथ एरिया में जो लाई कर रहा है और सॉल्वेबल है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है. फिर जो वाला स्ट्रेंथ में है लेकिन मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, सेकंड अटेम्प्ट में वो. फिर थर्ड सेट वो होता है जो मतलब थोड़ा एरिया कंफर्टेबल नहीं है और मे बी सॉल्वेबल हो सकता है, तो फिर थर्ड अटेम्प्ट मेरा वो रहता है. तो उस सीक्वेंस में एंड फोर्थ तो छोड़ना ही है ना, एक तो छोड़ना है. एक तो छोड़ना ही है. और वो कौन सा छोड़ना है उसके लिए पहले देखना तो पड़ेगा, कौन सा करना है और कौन सा छोड़ना है और क्या सीक्वेंस होगी बीच में, देखना तो पड़ेगा ना सारा सेट. ये गलती स्टूडेंट्स करते हैं, दे डोंट लुक एट द सेट्स, दे जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. वो नहीं हुआ तो दूसरे पे जाते हैं. दैट्स अ रॉन्ग वे, बिकॉज उस तब तक 10-15 मिनट निकल चुकी होती है और फिर प्रेशर बनता है और फिर जो सेकंड डुएबल सेट होता है वो भी नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से, है ना. So I'm sure you guys are facing this problem, guys. So please follow this strategy. This is a good strategy. So skim through the section, understand the question types, identify and start with the easy and familiar section questions. Analyze data carefully and note key information. So हर set में key information को कहीं लिख दो. When you're making that layout ना, तो एक तो सही layout जरूरी है और कोई भी information miss नहीं होनी चाहिए. ये बहुत जरूरी है, वरना ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ पे गलती कर रहा हूँ और पता ही नहीं चलेगा, टाइम निकल जाएगा, right? So solve logical reasoning puzzle systematically. I'm sure we know this. Okay. इसमें से important points क्या है? Be the second last point. Be flexible and learn to move on, guys. You are more of a move on generation than I am. It shouldn't be difficult for you to move on, है ना? So be flexible. Now what does be flexible mean? यार be flexible means very simple. अगर मुझसे पूरा सेट टूटता है तो मैं पूरा सेट तोड़ूंगा. अगर मुझसे पूरा सेट नहीं टूटता है और 2 क्वेश्चन निकल रहे तो 2 क्वेश्चन निकल के आगे बढ़ जाऊंगा, एक निकलेगा तो एक निकल के आगे बढ़ जाऊंगा, बट आई विल हैव टू मूव ऑन, राइट. अ गुड गैम्बलर नोज व्हेन टू स्टैंड अप, वेदर ही इज विनिंग और ही इज लूजिंग. कब खड़ा होना है वो पता होना चाहिए. इन CAD you are that gambler who should know when to move on. That decision making is exactly what is important for you, right? Okay, so anything that Rohit you want to add before we go on to quant? सो लास्ट पॉइंट, जैसे हमने मूव ऑन की बात करी तो मैंने हर सेट के लिए टाइम डिसाइड कर रखा था. लाइक लास्ट टू लास्ट मैं 6-7 मिनट्स दूंगा. 6-7 मिनट्स में अगर मेरा एक भी क्वेश्चन क्रैक होता है तो आई एम कंफर्टेबल कि मैं बाकी ऑप्शंस भी देख सकता हूँ, बाकी क्वेश्चंस भी देख सकता हूँ. लेकिन अगर 6-7 मिनट्स में एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है देन डेफिनेटली मूव ऑन, नेक्स्ट सेट मूव करना है, छोड़ना है, अभी बाद में देखेंगे. Okay, cool. I think that works. So yes Rohit, कोई भी आपको कहीं पे anecdotes, कोई stories याद आती है अपनी या किसी और की friend की, तो please feel free to share. I think these guys will relate to that immediately, right? Let me know and you can stop me anytime. Okay, so having discussed this, let's go on to quant. अब क्वांट की स्ट्रैटेजी में ये स्लाइड आप लोगों ने अगर RT99 अटेंड किया है, ये उसका क्रक्स दे रहा हूं मैं आपको, राइट. ये 12 घंटे का सेशन इन हाफ एन आवर. ओके, सो QA स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंट क्या है? सो ये जो आपके स्लाइड पे ऊपर दिख रहा है ना आपको, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन, व्हाट एम आई आस्क्ड टू डू, क्या दिया है, क्या पूछा है. अगर इतना समझ लोगे तो आधा काम तो खत्म हो गया तुम्हारा.
अब उसके बीच में क्या करना है, यू कुड यूज अ फॉर्मूला, right? You could do the formula and then do the calculation. That is a way you go about it. But sometimes you don't need to do that. Sometimes there's a chapter you don't know, but शायद logically देखोगे तो हो ही जाएगा. तो वो logically जो है, वो logic क्या है, तो there are 8 ways of solving a question, and using a formula and doing that calculation is only the one way of it. Okay, rest of the ways are, as I'll just read them out. Make approximations where you can approximate करो, आगे बढ़ो. एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, स्टेप के मार्क्स नहीं मिलने वाले भाई, ठीक है, स्कूल नहीं है ये, तो स्टेप्स नहीं करने, मुझे आंसर निकालना है. मुझे नजदीक का आंसर मिल गया और ऑप्शंस थोड़े से दूर है तो मेरे को आगे करना ही नहीं है उसको. अच्छा, ऑप्शंस नजदीक है तो अलग बात है, देन आई टेक अ डिसीजन, right? So make approximations. You can sometimes work backward from the options. You see the options and you say कि हाँ, no, let's work backwards. Maybe इसको fit करके देखता हूँ, तो आंसर आ जाए. हो जाता है कई बार. तुम्हें कई बार वो कौन सा चैप्टर है, कौन सा फॉर्मूला है, वो you don't need to do that. Sometimes just look at the options and you might just work backwards. But all of these things that I'm talking about, you must do right now. अच्छा, actual mock लिख रहे हो in your time, you might not be able to do that. बट वो मॉक के बाद का जो एनालिसिस और सॉल्विंग है वो इसीलिए है. सो सिट आफ्टर द मॉक, यू सी कि कुड आई हैव डन दिस क्वेश्चन इवन दो आई डोंट नो द चैप्टर और द फॉर्मूला. कुड आई हैव डन दिस क्वेश्चन इवन इफ आई गॉट इट राइट, कुड आई हैव डन इट इन अ शॉर्टर टाइम और इन ईजियर वे. ये सोचना जरूरी है. यहां से तरीके निकलेंगे. अगर ये एक्सरसाइज आप नहीं करते जा रहे हो ना, तो आप गलती कर रहे हो. ये आपका वो एक और क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन जो करना है, विच विल इंक्रीज योर मार्क एंड परसेंटाइल, ये आपको हेल्प करेगा. And this is as true for verbal and DILR as for quant. What do you say, Rohit? So सर लाइक जैसे आपने पॉइंट मेंशन किया टाइम का, तो सीएल के मॉक्स में एक क्वेश्चन रहता था जहाँ टाइम एनालिसिस रहता था कि टाइम प्रोडक्टिविटी एनालिसिस. हाँ, यस, टाइम टेकन बाय यू, एवरेज टाइम, टॉपर्स टाइम. सो जो क्वेश्चंस मेरे करेक्ट थे, मैं उनको एक बार रिविजिट करता था कि मतलब जो टॉपर है उसका टाइम कितना है और मेरा टाइम कितना है, लाइक एवरेज टाइम कितना है. अगर मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, मतलब तो वो सही भी question- हुआ है और लोगों ने उसको टॉपर ने 1.5 मिनट में किया है और मैंने उसमें 3.25 मिनट लगाई है, तो क्यों लगाई है? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. आई कुड हैव डन इट इन 1.5 मिनट आल्सो, right? So that is the analysis to be done. I hope you guys are going through that much of a depth of analysis. CL offers you this. In fact, Rohit, मैं आपको एक बहुत प्यारा चीज ऐड करना चाहूंगा here. This year we've added a time productivity analysis. मतलब आपने सही क्वेश्चंस में कितना टाइम वेस्ट किया, गलत क्वेश्चंस में कितना टाइम वेस्ट किया, या टोटल ऑफ इट पर सेक्शन, which tells me कि मैंने, मान लो कई बार ऐसा लगता है कि I wasted in wrong questions, but you might have wasted the time in the correct questions, right? So we've added that portion to the analysis this year, right? So great. I'll go ahead. So work backwards के बाद look for patterns. Sometimes है ना, हम लोग वो P, K और N जैसे वेरिएबल्स देख के डर जाते हैं कि यार ये नहीं होना मुझसे, नहीं होगा, देख के छोड़ देता हूं मैं. भाई तुम खाली 0, 1, 2 डाल के देखो, उसमें शायद एक पैटर्न निकल के आ जाएगी और आंसर ऐसे ही निकल जाएगा. एंड इट इज अंडर 1 मिनट और अंडर 2 मिनट्स मैक्सिमम. So sometimes questions come out that way. I'm talking about CAT level questions. I'm not talking about module level questions. Okay, ये निकलता है और हमने RT99 में यही डिस्कस किया है. In case you've missed it, right? अगला RT99 अटेंड करना, आपको मैं दिखाऊंगा ये कि कैसे किया जाता है. Okay, eliminate options. Of course, अगर एक eliminate कर दिया, दो ऑप्शन eliminate हो गए, तो मेरा probability of getting the answer correct, अगर एक में 4 ऑप्शन में से एक सही होता तो 25%, 25% is the probability of getting an answer correct. But if 2 options I'm eliminating, then 1 out of the 2 remaining options is my answer, which is 50% probability. Normal thought करें, differential probability में ना जाए तो, ठीक है, it is 50%. That's a good number. अगर आपको तुक्का भी मारना है, 2 एलिमिनेट हो गए तो भी 50% probability that you will get the answer correct. I'm not saying कि तुक्का मारो. I'm just saying in case you want to take a calculated risk, you can, right? Visualize information. Lot of kids leave geometry because फिगर बनाने में डर लगता है. तो खाली फिगर बना लेगा ना बेटा, आंसर कूद के निकल आएगा कई बार, not always, but sometimes answer comes out. You just have to visualize it. या TSD का क्वेश्चन है कि ये ट्रेन यहाँ से गई, वो ट्रेन वहां से आई, विजुअलाइज तो करो, एक पिक्चर तो बनाओ पेपर पे, शायद आंसर निकल जाएगा. Sometimes it is that easy. All right. Use manipulations and sometimes guess and check. Guess and check मतलब क्या होता है?
Guess and check does not mean guess. Okay, sometimes you estimate, sometimes you use your intuition कि मेरे को ये लग रहा है, राइट? आपका इंट्यूशन भी आपके एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड होता है. आपने कुछ किया था, उसके बेसिस पे आप आंसर दे रहे हो आज, और वो सही हो भी जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ट्राई तो करो. अभी आप डरते हो ट्राई करने से. ये सारी चीजें करने का ट्राई करो, फिर देखो कि सही हो रहा है गलत हो रहा है. मे बी इट माइट जस्ट वर्क फॉर यू. आप एक्सपेरिमेंट करने से इस स्टेज पे मत डरो. आपके पास बहुत सारे मॉक्स हैं. अगर आप सीएल स्टूडेंट हो तो आपके पास कम से कम 30 मॉक्स हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अलग हैं, तो आपके पास बहुत सारे मॉक्स हैं. 2-4 मॉक्स वेस्ट भी हो जाएंगे ना ट्रायल एरर में तो चलेगा. वो भी फायदा है, नुकसान नहीं है. करो एक्सपेरिमेंटेशन, डरो मत. राइट? यस रोहित, योर कमेंट्स अबाउट क्यूए स्ट्रेटेजी. चलिए. क्यूए में मोस्टली गौतम सर जैसे मेंशन करते थे कि छोटे छोटे ट्रिक्स वगैरह वो भी यूज़ करना है. तो आपने जैसे मेंशन करा कि पहले से ही एक बार ट्राई आउट करना है कि जैसे मेरे को ऑप्शंस ट्राई आउट करना है, या फिर एन की वैल्यू पुट करनी है 1 2 3, या फिर 0 डाल के देखना है, और या फिर मेरे को ऐसे मल्टीपल्स देखने हैं 5 10 और 15, तो या फिर 0 का मल्टीपल्स है क्वेश्चंस में, तो वो पॉइंट्स एक बार पहले से ही चेक कर लेते हैं. और जो भी मतलब जैसे मैं क्वेश्चंस करता था मॉक्स में, ऐसा किसी फॉर्मूला लग रहा है, ऐसा कोई ट्रिक लग रही है, तो मैं उस ट्रिक को नोट कर लेता था एक नोट्स में, तो ताकि लास्ट मिनट पे जब रिवीजन कर रहे हैं जस्ट बिफोर मॉक या फिर फाइनल डी डे से पहले, तो वो चीज़ें यूज़ कर सकूँ. एक वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है. करेक्ट, फेयर इनफ, राइट. इनफैक्ट ये सारी चीजें ना अगर एनालिसिस के तौर पे अगर हम करेंगे, एवरी वीक गाइस, एवरी मंडे अपना सीडीसी होता है. सीडीसी मॉक मतलब काउंटडाउन कैट, फॉर दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ द सीएल इकोसिस्टम, राइट. तो ये जो सीडीसी होता है उसका एनालिसिस रोज हर मंडे 8 बजे होता है, विच इज ऑन यूट्यूब. यू शुड अटेंड दैट जस्ट टू सी ये क्वेश्चन को कैसे इजी डिफिकल्ट, हाउ डू यू एनालाइज अ क्वेश्चन कि ये कैसे हो सकता था, राइट. सो ओके, एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर बिकॉज देयर इज अ लॉट टू कवर एंड आई नो यू हैव टू लीव इन सम टाइम, सो आई नीड टू गिव यू दैट टाइम. अच्छा, मैं क्विकली एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ एंड आई एम जस्ट टेकिंग दिस डाउन एंड यू हैव ऑल दिस इन सीएल का आपका आईडी, राइट. सो ओवरऑल स्कोर कार्ड है, ओवरऑल परफॉर्मेंस एनालिसिस है, फिर सेक्शन वाइज performance analysis है, VRC, DA, LRDI and quant, right? Then you have accuracy analysis, question time analysis, drill down analysis, which is very important, right? To go into the depth. जो रोहित और मैं बात कर रहे थे टाइम प्रोडक्टिविटी एनालिसिस, एंड देयर इज न्यू थिंग व्हिच we've added is booster analysis. ये बूस्टर एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग है. कभी टाइम मिला तो आई विल टेक यू थ्रू. मेरे स्लाइड में है, लेकिन मैं अभी बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, बट जस्ट क्विकली आई विल शो यू सम पार्ट्स ऑफ इट. And Rohit, you can help me comment on those parts if at all, right? So this is a typical graph जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कितने स्कोर पे मुझे कितना परसेंटाइल आ रहा है. So मान लो ये मेरा परफॉर्मेंस है इस मॉक में, and I'm looking at VARC and I'm saying that this is my score, right? अभी I'm just, it's a representative graph, but there'll be a score that you'll see. इस स्कोर पे I'm getting a what is this number, 50 percentile. If I want to get a 75 percentile, this much score will be required. Can I get that much score? You can actually reverse engineer. Go back and check कि मैं 2 और क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन निकाल सकता था, वो स्कोर ला सकता था, and I could have got a 75 percentile instead of 50. You know, those kind of activities, this is how you start off. This is the beginning of the analysis, right? All right. There is this analysis where your corrects and incorrects और उनको easy medium and difficult level पे डाला हुआ है. So यहाँ से क्या समझ में आता है? Just for example, I'll just take you through this fast because we want to move on, right? Medium में या difficult, section 1 में verbal में 2 difficult questions थे, 21 and 26, and I got them wrong. Why did I do them? Why? नहीं करना चाहिए था. So I could click on them and find out which questions they were. Next time I will not do those kind of questions because they are difficult also and I got them wrong. Whereas look at question number 15 and 16. Again in the section number 1, easy में. क्यों छोड़ा? Easy था ना, तो मुझे क्यों नहीं समझ में आया कि ये easy है? Why did I leave it? Can I go back and try it to be able to judge कि easy होता कैसा है, difficult होता कैसा है, तो जाके देखो उसको. तो selection easy पड़ेगा. So selection is the key, Rohit. Selection. Please give some nuggets on selection of questions. So like हमारे पास कई बार पहले से एप्रीहेंशंस होते हैं कि ऑड वंस आउट हैं वो हार्ड ही होंगे,
या फिर पैरा समरी पैरा जंबल्स हैं वो हार्ड ही होंगे। लेकिन कई बार पैरा जंबल्स ऐसे एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जस्ट आप एक बार देखोगे तो और ऑप्शन से ऑर्डर मैच करोगे तो हो जाता है। वी कैन लाइक 1 2 3 4 सीधा सीधा ऑर्डर होता है, तो वो करेक्ट। इजी क्वेश्चंस होते हैं। और जो पैरा समरी में भी कई बार ऐसे हार्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंटरप्रेट ही नहीं होता है, तो वो डिफिकल्ट रीजन में सो इट इज मिस वेरी करने पर। इंपॉर्टेंट कि हम लोग गलत क्वेश्चंस को नहीं करने हैं। जैसे हम DILR में हमने डिस्कस किया कि ये सेट नहीं करना है और ये सेट तो करना ही है, वो हर जगह इट इज एप्लीकेबल, राइट? सो दैट्स व्हाट इट मींस। परफेक्ट। So let's move on to question-wise analysis. There's question-wise analysis, then there is drill-down analysis. I'm not taking you through each of these things, right? Just quickly, I'm just telling you कि analysis important है, all right? There's something called booster analysis. ये थोड़ा सा एक quick minute देखते हैं. Especially for those students who are not a part of CL also should know this कि analysis ऐसे होता है. So ये आपका टेस्ट खत्म हो जाने के बाद you can go and re-attempt the paper. मैं ये रीअटेम्प्ट करूंगा, फिर मैं व्यू सोल्यूशन या वीडियो सोल्यूशन देखूंगा कि मैंने जो किया, सो मैं दूसरी बार उसको अटेम्प्ट कर रहा हूं टू सी वेदर फ्लूक से हुआ या सही हुआ, डू आई नो इट और डू आई नॉट, राइट? एंड देन आई कैन लुक एट द सॉल्यूशंस। नीचे आप देखिए, द क्वेश्चन वाज अ गुड शॉट, अनफोर्स्ड एरर, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, सो वी हैव डिफाइंड दिस, ओके? सो लुक एट दिस, ये टेबल है, मतलब मुझे क्वेश्चंस मैं कर पाता और मैंने सही किया तो इट्स अ गुड शॉट। मैं अगर कर ही नहीं पाता, मुझे आता ही नहीं था वो, लेकिन मेरा सही हुआ है, तो वो रिस्की शॉट है, फ्लूक से सही हुआ है। सो इस तरह का एक एनालिसिस होता है, और ये सारा एनालिसिस आप जैसे मार्क करते हो, उसके बाद इट टेक्स यू थ्रू टू दिस काइंड ऑफ अ सेटअप कि आपका 1 or 2 वाज अ गुड शॉट, some other question was a bad shot, it was missed opportunity, this was a well left one. So is tarah ka, and then you have jugaad solutions and other things. So Rohit, this you might not have seen because this is a new addition this year to the analysis. What do you think about this? Yeah, like this was not there last time. So Yeah, we can mark the question, bookmark the question on the basis of missed opportunity and like good shot or not. So we correct. can So refer to them later. exactly, it got bookmarked here. So you see bookmarks here, ये question इस तरह bookmark हो जाता है. So you can see the my bookmarks, good shot bookmarks. So वो सारे questions revision में a student can revisit. The question is, students, are you revisiting it? टूल्स आपके पास है, आप उसको यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सो यहाँ पे यार रोहित, आपने रिवीजन की बात करी थी, तो आई वांटेड टू ब्रिंग इट हियर. कैन यू प्लीज टेल मी हाउ रिवीजन इज इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टू दिस कैट एग्जाम? मतलब एक बार जैसे मॉक दे दिया, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो पॉइंट क्या होता है कि उस टाइम पे तो सॉल्यूशन समझ में आ गया कि हमने एरर कहाँ पे करी और कौन सा नया कंसेप्ट हमने उसमें प्रॉब्लम में सीखा। लेकिन 3-4 डेज लेटर डाउन द लाइन क्या होता है कि हम वो पोर्शन भूल जाते हैं, फिर सेम मिस्टेक हम दूसरे मॉक्स में सेक्शनल्स में कमिट कर रहे हैं, हम रियलाइज नहीं करते हैं। तो अगर हम रिवीजन प्रॉपरली करेंगे So we तो are repeating the mistakes. If we हाँ do the revision right, we'll not repeat the mistakes at least. रिपीट राइट। Perfect, perfect. So ये 55 days में हम बात कर रहे हैं basically strategy, analysis and importance of giving mocks, right? Now let's move out of this and talk about something else before I give the stage to you to share something that you want to, right? So मैं revision की बात करी already. Now let's go on to 2 points, must do and must don'ts of these next 55 days. Okay, so must do में क्या है? कम से कम मैंने बोला 2 tests a week देने ही है. I'll not repeat it in detail. We've talked enough about this, Rohit. So we'll move on to the second one. Also, we've talked about it. Analyze each test, each mock after you've taken the mock, attempted the mock, right? What Rohit said, I did not, right? Is read articles regularly. So ये मेरे भी एजेंडा में था, Rohit. Thanks for covering that, right? इंपॉर्टेंट और भी है भाई, समटाइम्स टेक अ ब्रेक ऑल्सो. अगर आपको लग रहा है कि आप ओवर वर्क हो रहे हो, ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हो, सी प्रेशर इज गुड, प्रेशर आपको काम करवाता है. बट जब आपको लग रहा है कि स्ट्रेस्ड हो रहे हो, टेक अ स्टेप बैक, वॉच अ मूवी, गो आउट विथ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और फ्रेंड्स और व्हाटएवर, राइट? रिलैक्स, माँ बाप के साथ बैठ के चाय पियो, जरूरी है कभी, ठीक है? बट टेक अ ब्रेक समटाइम्स एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डोंट फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवाइजिंग. सो ये तो मस्ट्स है. मस्ट डोंट्स पे चलते हैं.
कोई मस्ट आपको ऐड करना है रोहित, या ये गुड इनफ? एक मस्ट जो है, मतलब सारे बेसिक कंसेप्ट सारे टॉपिक्स के कवर करने हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जैसे क्वांट में मेरे को टाइम वर्क नहीं आता, मेरे को मिक्सचर एलिगेशन नहीं आता, तो लेकिन कोई भी इजी क्वेश्चन आ रहा है तो मैं कर सकूँ, तो वो एक परफेक्ट मस्ट है कि मतलब सारे बेसिक्स तो होने ही चाहिए। यार। हाँ, सो इजी क्वेश्चन है और मैं नहीं, मुझे नहीं, चैप्टर नहीं आता इसलिए क्यों छोड़ूं? इजी है तो मैं लॉजिकली भी शायद कर सकता था अगर बेसिक्स मेरे क्लियर होते तो। यू आर सो राइट। सो यार वो लोग जो ये छोड़ सोच रहे हैं कि 28 चैप्टर है क्वांट में, मैं सर कुछ छोड़ दूं तो चलेगा? चलेगा, बिकॉज तेरे को सारे क्वेश्चन करने नहीं है, ठीक है, कुछ तो छोड़ने भी हैं। तो 8 चैप्टर नहीं हुए, 20 कर लिए ढंग से तो अच्छी बात है, बट वो 8 भी देख लेना। बेसिक्स इज व्हाट रोहित इज सेइंग। बेसिक्स देख ले एटलीस्ट, इजी क्वेश्चन निकाल लेगा चुन के, बाकी छोड़ देना। राइट रोहित, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? राइट, मतलब एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद हो मुझे, like, करेक्ट, परफेक्ट। और कोई मस्ट याद आ रहे हैं आपको अभी? बाकी मस्ट तो मेरे लिए जो था कि कंसिस्टेंट थी, क्योंकि अब क्या है, दिवाली आने वाला है, दशहरा आने वाला है, तो लॉन्ग ब्रेक नवरात्रि, नहीं होने दुर्गा चाहिए। पूजा सब कुछ ही आने वाला है। हाँ, तो हाँ, लॉन्ग ब्रेक्स नहीं होने चाहिए, मतलब ठीक है एक दिन आप रेस्ट कर रहे हो, रिजुवनेट कर रहे हो, लेकिन एक दिन से ज़्यादा का ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मोमेंटम जब ब्रेक हो जाता है तो वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। करेक्ट भाई। पूरी जिंदगी त्योहार मनाने हैं। एक एक साल जाने दो, ठीक है, ये साल कैट का है, राइट? अगर भूल से ऐसा हो जाए कि रिलेशनशिप अफेक्ट हो जाए तो एक टाइम के लिए चलेगा, करियर बना ले भाई। मजाक कर रहा हूँ, दिस इज अ जोक, डोंट प्लीज डोंट गो एंड ब्रेक अप, don't do that. Or if you want to, I won't stop you, of course. But yeah, so let's go on to the must don'ts. Don't focus on one section only, please. ये याद रखो। बच्चे क्या करते हैं कि सर मेरा ये सेक्शन स्ट्रांग है तो स्ट्रांग 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 ही करते रह गए। कोई बोलेगा सर मेरे को वीक एरिया एरिया है तो वीकनेस पे ही काम करते रह गए, उस चक्कर में स्ट्रेंथ कम हो गया स्ट्रांग एरिया में। भाई बैलेंस होना चाहिए, यू आर सपोज टू बैलेंस। सो यू टू टेक दोज वीक एंड स्ट्रांग एरियाज एंड वर्क टुगेदर। व्हाट इज द पर्पस? स्ट्रांग को और स्ट्रेंथन करो, फोर्टिफिकेशन बनाना है, गढ़ बना लो अपना, कि वहां आपको कोई हरा ना सके। और वीकनेस को कम से कम वीकनेस में से बाहर निकालने की कोशिश करो, और ये दोनों साथ में करो। इसलिए मैं बोलता हूँ डेली डोज अगर कोई सब कर रोज करता है ना, मान लो मैं क्वांट का एक चैप्टर लेके अटक गया 3 दिन, तो 3 दिन में क्या वर्बल को छूंगा? नहीं, नहीं, मैं कम से कम 2 दिन डेली डोज कर लूंगा तो वर्बल तो हो गया मेरा, आरसी वर्बल। उतना तो कर ही सकता हूं। एक सेक्शनल ले लिया मैंने वर्बल का या एलआरडीआई का, तो मैंने उसको छू तो लिया कम से कम। आई एम नॉट कंप्लीटली स्किपिंग इट, राइट? सो डोंट फोकस ऑन वन सेक्शन ओनली, please understand this. Stop practicing your strength areas or sections. So this is a don't stop practicing, okay? So don't stop practicing your strength area. Strength area को कभी भी छोड़ो मत, उसको पकड़ के अंत तक रखना पड़ेगा। एंड डोंट पैनिक, चाहे वो टेस्ट के अंदर हो, चाहे वो प्रेप के टाइम पे हो, पैनिक काम बिगाड़ता है। आपको जब भी लगे पैनिक, देयर इज अ नाइस वे, आजकल बहुत फेमस चल रहा है, 2 ब्रेथ। आपने सुना है कि टेक अ ब्रीथ इन एंड देन स्टॉप, डोंट ब्रीथ आउट एंड टेक अनदर ब्रीथ इन टुगेदर। तो आपका दिमाग, द ऑक्सीजनेशन ऑफ योर बॉडी विल बी बेटर, यू विल रिलैक्स। ऐसे 4-5 ब्रेथ ले लो और शांत हो जाओ और फिर काम शुरू करो। डोंट पैनिक, पैनिक डजंट हेल्प। ओके, सो these are my don'ts. Rohit, in case you have any don'ts to add, please do. एक स्मॉल पॉइंट है, लाइक मतलब आगे हम लोग मॉक्स देने वाले हैं, तो किसी भी एक मॉक में जैसे बहुत बहुत ही कम स्कोर आ रहा है, तो उसको एकदम ऐसे दिल पे नहीं लेना है कि लाइक मेरा एक मॉक में कम स्कोर आ गया, मैं इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा कैट कैसा होगा, तो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो एक्चुअल डे की परफॉर्मेंस है काफ़ी अलग होने वाली है। तो एक दो मॉक का स्कोर नीचे डाउन हो रहा है या फिर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, चलेगा, परफॉर्म करना है, डी डे तक जाना है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। Okay, cool, great point. Okay, so we are sitting at 9:13 right now, right? There's a hard stop at 9:30 for us because some students might have to go and attend their night lectures, but I'm sure Rohit has to leave before that, right, Rohit? So whatever you want to share, open forum for you to speak whatever you want to before I go ahead. Sure. So like next 55 days, everyone needs to plan their strength and weaknesses, and according to that, they need to build a particular strategy, like how I am going to divide my days,
and how I going to build on my strength and work on my weaknesses, as well as cover all the basics, so that you are not going to miss easy questions, and as well as maintain the consistency, so that you are in a right momentum when you are appearing for the exam. Also, in last month, prepare for previous year questions as much as you can. Look into this. Previous year questions. You said that twice, so that is very important. Okay, fair enough. Anything else? Any story you want to share that will pump up these guys? सो लाइक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मेरा 85-86 परसेंटाइल से मॉक कैट का मॉक स्कोर कभी ज़्यादा नहीं गया था, लेकिन एक्चुअल डे में आई स्कोर 99.67. तो जो भी गाइज हैं मतलब आप 85 टारगेट कर रहे हो या 95 टारगेट कर रहे हो, 99 टारगेट कर रहे हो और आपका 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है कि यू कैन नॉट रीच 99, 98 वॉट एवर यूर टारगेटिंग. पॉसिबल है. Maintain the consistency, and you can never imagine what can happen on the D-Day. So Rohit, can we always conclude that abhi bhi time hai or enough hai if people want to get it right? Yeah, okay, great. Great to hear that. Do you have time, or you would want to move on? Yeah, I need to I wish you all the best. I know 9:20 you have to get somewhere. So thank you so much for being here on behalf of all my students as well, and wish you all the best in future. Right? Thank you so much, Rohit. Thank you, sir. Thank you, We sir, are for this. continuing, guys. Any last word, please, Rohit? Guys, just focus on the basics and maintain the consistency. It will like get you through those 55 days, and you will be enjoying like how you perform on the D-Day, and you will be looking back how you have maintained all these. You have come across all these challenges and performed well. Like you are gonna get through. Everyone is gonna get through this. Perfect. This was very useful, Rohit. Thank you so much, and have a good night. Bye bye. Thank you. Right, guys, we are continuing here, right? So in case you guys want to utilize, abhi bhi pata nahi chal raha hai karna kya hai, these are the resources you already have if you are a part of the CL community. Else you can have, so मान लो कि अभी भी टेस्ट सीरीज आपको देना है या डेली डोज देना है, रोज का रोज टेस्ट हर सेक्शन का स्मॉल कंज्यूमेबल पार्ट्स में, या आपको कुछ और चाहिए, आपको मान लो सिर्फ प्रॉक्टर टेस्ट फॉर्मेट चाहिए, राइट? सो जो हम CDCs बोल रहे हैं, काउंटडाउन कैट्स, all of these things you can go and just use. Okay, so visit our website and you can get it. So I'm not going to spend time on it. This is a Telegram group. I hope the team has got it right. ये CAT 23 का मेरे हिसाब से Telegram group होना चाहिए. So in case you guys want to scan this or take a screenshot of it and join this Telegram group or this YouTube channel, you may do that, because we'll keep putting important things, notifications, interesting articles, blogs, ye wo. We keep doing those things, right? A lot of engagement. So that will be useful for your prep in the next 55 days. Right. And with this, that's me. Thank you so much. I wish you all the best. And we will call you again for the next session that we have, right, coming up. Thank you so much, guys. Keep watching this space. Good night. Have fun. Bye-bye.